Hello everybody. This is Sushri Sashmita Sahu, lecturer in mechanical engineering from Government Polytechnic Nayagad. Hope everybody is safe at their home, practicing all social distancing and safety precaution methods, but still continuing with their studies. So let me start with my topic by giving you certain examples. Imagine karo tame gote examination hall re ocha. Hot or humid climate, gote tough paper exam chalchi. Suddenly electricity padela. What happens next? Every institution has a provision of a secondary standby set to provide electricity. Koi paribo kon seta? Chalo I would example douchi. Suppose you are in a shopping mall hanging with your friends or in a restaurant having very good food. But again, seti be electricity padela. But within fraction of second, again electricity is back. Kemti asuchi? Is it coming back from the main line? Or there also a secondary set is involved? Yes, the answer is a DG set, a diesel generator set. Generator mate electricity provide karuchi, jo there ki generator chalouchi mu diesel re. The same diesel which is used to run our automobiles. This brings us to the fourth chapter of your power plant engineering, that is your diesel engine power plant. In the course of my video lecture, I will be going through all the following contents. Firstly, I will introduce you the diesel engine power plant. I will explain the various parts of diesel engine power plant, which includes the diesel engine fuel storage and supply system, fuel injection system, engine air intake system, engine exhaust system, engine starting system, engine cooling system, engine lubrication system, and engine governing system. I'll also discuss the advantages of your diesel engine power plant, the disadvantages, the applications in practical life, and some assignment question. So let's start the diesel engine power plant. आमे एबे जाके जानिछु गोटे पावर प्लांट रे गोटे जनरेटर किंबा गोटे अल्टरनेटर थाए जे कि मोर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे. अल्टरनेटर चलिया पेंका मते दरकार कि तार रोटर शाफ्टा रोटेट हो. तो रोटर शाफ्ट रोटेट किए करिवो? जी भी रोटर शाफ्टा को रोटेट करिवो ताको कुहा जिवो प्राइम मूवर. So in a diesel engine power plant, the diesel engine is used as the prime mover. मते जाना अछि diesel, which is a fuel, it is filled of hydrocarbons. Hydrocarbons रे chemical energy थाए. Our diesel engine रे say chemical energy is burned to produce a heat energy, and that heat energy is used to run the shaft of the engine, producing mechanical energy. This mechanical energy is again used in a generator or alternator to produce electrical energy. So coming to the different components of a diesel engine power plant, firstly there's the diesel engine. You can see eta halamo diesel engine, taro engine shaft ta generator ra shaft saita coupled heichi. Then there is the fuel storage, supply and injection system. You can see the various parts: diesel engine, a transfer pump, the strainer, daily consumption tank, fuel filter, and finally the fuel injection pump. Then I have the air intake system, in which a air filter is used. Then I have the exhaust system, in which I have a silencer. Then the engine starting system, which uses a compressor and a air tank. The engine lubrication system, in which there is a oil tank, oil cooler and pumps. The engine cooling system has the water jackets, the surge tank, water pump, cooling tower, heat exchanger. All this together form the diesel engine power plant. तो आमे diesel engine power plant लो प्रत्येक system को details में पढ़िया. Starting with a diesel engine. As I already told you, due to the combustion of diesel, power is produced which rotates the shaft of the diesel engine. This shaft is coupled to the rotor shaft of the alternator, which produces electrical energy, as you can see from the picture. A diesel engine works on the principle of a diesel cycle. देखी पार्चो diesel cycle रे चारिटा steps थाए, चारिटा processes थाए. First is your isentropic compression. Second is your isobaric heat addition process. Third is your isentropic expansion process. And the final one is your constant volume heat rejection process. तो गोटे diesel engine रे मोर चारटा step. First थाए
इंटेक मु ऑलरेडी एटा जानी छी कि डीजल इंजन रे एयर और फ्यूल रो मिक्सचर हुए नी एयर इज सिंगल हैंडेडली टेकन इनसाइड द इंजन तो सक्शन रे मोर एयर खाली इंजन रे आसुची second is your compression where the air which is inside the engine is compressed third is your expansion compressed air रे जेतोले मु fuel inject करबी सेतोले गोटे expand गोटे blast kind of हबो जोटा कि हला तमर expansion and finally is your exhaust according to different classifications बहुत सारा classifications अच्छी but according to the cycle of operation your diesel engine is classified into firstly a two stroke engine parts तमे देखि परछो एठी ports थाए बा एठी intake port अछि outlet अछि एठी गोटे transfer port रहउची and the various parts are piston the connecting rod the crankshaft the flywheel and majorly गोटे fuel injector रहउची and there is a four stroke engine टिके complicated having many other various other parts main parts गोड़ा कह दउची there is a cam there is a fuel injector एठी हला तो हमरो intake valve और एटा exhaust valve there's a piston there's the connecting rod there's a crankshaft and this is your crankcase आमे ए दीटा को details रे पढ़िया very firstly the two stroke diesel engine well two stroke diesel engine नारु ही जणा पड़ची दीटा स्ट्रोक रे ही मोर पूरा साइकिल कंप्लीट हबो सो एथिपेका आज कि मोर चारिटा प्रोसेस अच्छी किंतु स्ट्रोक दीटा मोर गोटे स्ट्रोक रे किछि प्री डिफाइंड न थाए किछि अलगा है कि नाही से माने टिके मिसी जानती तो आई कैन सी फ्रॉम दिस वीडियो दिस इज योर टॉप डेड सेंटर एंड दिस इज योर बॉटम डेड सेंटर देखो टीडीसी रे जतले पिस्टन टा रहउची देयर इज अ कंबशन एंड से कंबशन रो पावर सकासे माय पिस्टन कम्स डाउन टू द बीडीसी सिमिलरली जेतले बीडीसी रु मोर टीडीसी को जाउची यू कैन सी एठी मोर इनटेक होउची मोर एयर इनटेक होउची जोटा कि क्रैंककेस रे बोली कि जेतले ऊपर को जाउ थाए सेठी मोर ट्रांसफर होउची आउ ए एयर जो नुआ एयर आछी नुआ एयर जोटा आसुची सी कोन करिवो एग्जॉस्ट को बाहर कर देबो सो यू कैन सी एठी डीटा को स्ट्रोक रे मोर इनटेक होउची कंप्रेशन होउची एक्सपेंशन भी होउची आउ एग्जॉस्ट होउची कमिंग टू अ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन माने चारिटा स्ट्रोक आउ चारिटा प्रोसेस तो प्रत्येक स्ट्रोक रे डिफरेंट प्रोसेसेस अलगा है के अछि फर्स्ट यू कैन सी फर्स्ट हला तमर इनटेक देन कंप्रेशन देन एक्सपेंशन देन अगेन योर एग्जॉस्ट इनटेक रे तमर इनलेट पोर्ट टा खोलिबो इनलेट वाल्व टा खोलिबो खाली एयर आसीबो कंप्रेस होबो एयर देन एक्सपेंशन होबो जस्ट प्रायर टू योर एक्सपेंशन मोर फ्यूल इंजेक्ट कर देबो देन एक्सपेंशन होबो एक्सपेंशन परे एग्जॉस्ट पोर्ट टा खोली कि मोर फ्लू गैसेस किंबा एग्जॉस्ट गैसेस मोर सिस्टम रो बाहरिबो इफ आई कंपेयर बिटवीन अ टू स्ट्रोक एंड अ फोर स्ट्रोक डीजल इंजन का बहुत एडवांटेजेस भी अच्छी बहुत डिसएडवांटेजेस भी अच्छी कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ अ टू स्ट्रोक इंजन मोर सिंपल डिजाइन रहुची बहुत कॉम्पैक्ट इंजन रहिबो मोर पावर डेवलप हे परिबो गोटे स्मॉलर फ्लाईव्हील लागिबो आल्सो द कैपिटल कॉस्ट इज वेरी लेस देन अ फोर स्ट्रोक इंजन बट इन द सेम केस जेतोले मो गोटे बड़ो पावर प्लांट को जिबी सेतोबले द थिंग्स व्हिच फोर स्ट्रोक इंजन emphasizes are low specific fuel consumption, higher efficiency, effective lubrication and cooling and less noisy. So सेइते पेंका जतले गोटे बड़ अमाउंट रो पावर प्लांट को मुजिबी I will go for a 4-stroke diesel engine. Now coming to the fuel supply system of a engine. जेमती आमको पावर डेवलप करिया पे जेमती आमे खाद्य खाउछु गोटे डीजल इंजन रो खाद्य हला तार फ्यूल आ तार एयर सो फ्यूल सप्लाई सिस्टम रे देखि परचो देयर इज अ डीजल टैंक देयर इज अ ट्रांसफर पंप देयर इज अ स्ट्रेनर देयर इज अ डेली combustion tank fuel filter and the fuel injection system. We already know diesel is a very flammable fuel. निया लागिबर चांसेस बहुत थाए सेइथिपेंका मु डीजल जोटा आने सेटा मोर डीजल पावर प्लांट रु टिके दूर रे रखे सो दैट
सेफ्टी मोर रहिबो. So एठू the fuel is delivered to the plant by railroad tank car, by truck or by barge and tankers which are stored in the diesel tank situated outdoors for the sake of safety. Diesel tank रो मोर प्रत्येक दिन पेंका जेतिकी ही fuel दरकार सेतिकी मोर सप्लाई हबो डेली कंजप्शन टैंक को via a transfer pump and a strainer. Strainer is just a filter जे कि impurities किंबा metallic particles को अलगा करिवो and pump use होची as you can see एठी गोटे height difference रहुची and basically this tank has to be at a height greater than the engine. देखि पारछो engine रो टिके अधिका height रहुची सेति पेंगा एठी मु गोटे transfer pump use करिवि and also you can see जदि किछि diesel amount excess हे गेला से दिन रे जदि खर्च हेलानी that comes back into the diesel tank using this overflow line and from this tank प्रत्येक दिन filter देकी मोर injection pump को जाउची. So coming to the next, that is the injection system. Injection system फोनी कौन? As I told you कि मोर diesel engine रे खाली air मोर intake stroke रे जाए जोड़ा कि compress हुए. सी compress है सारला परे ही मु fuel मोर supply करिबी and I have to make sure that the fuel are very small particle with high pressure so that सी air रो particle सहित जेतोले air particle surround हबो सेतोले सेथरे गोटे explosion हो. तो केमिति हबो? डीजल एते छोटो पार्टिकल्स केमती हबो? डीजल केतो बळे पसिबार अछि? डीजल केते अमाउंट रे पसिबार अछि? That is defined from a injection system. So the injection system must measure, inject, atomize and mix a very small quantity of fuel with compressed air. The essential function of a fuel injectors as ki mu tamu कहली, deliver oil from the storage tank, raise the fuel pressure, measure and control the amount of fuel, control time of injection, spray fuel into the cylinder in atomized form and distribute properly the fuel in the combustion chamber. A fuel injection system are of different types. First, your fuel injection system can be classified into air injection system and solid injection system. जेतो बळे मु fuel टा को supply करिबी in engine with the help of compressed air, that is known as your air injection system. But जदि मु compressed air माध्यम रे देलिनी मु गोटे pump use करिबी to supply into the diesel engine, that is known as your solid injection system. Again, solid injection system is of two types, mechanical injection system and electronic injection system. Of course, from the name it suggests mechanical mane kicheda mechanical devices laguchi, then it is mechanical injection system. Our electronic injection system means with the help of an ECU, electronic control circuit, or some electronic signals mu fuel inject karuche. Again, mechanical injection system is of many types, common rail injection system, unit injection system, individual pump injection system, distribution injection system. Majorly मोर diesel power plant रे ए चारिटा लागुची, तो we will be going into details of only this four. The common rail injection system, as the name suggests, a common rail गोटे common point थिबो जोठी मोर fuel supply होउची. So figure रे तुम देख पारछो गोटे high pressure pump रहउची. From the high pressure pump, गोटा ही high pressure pump अछि. From this pump, the high pressure fuel goes into the header or a common rail, and from there, when there are multi cylinders, as you can see, एठी दीटा cylinder मुतम picture रे अछि. Multi cylinder रो multi injectors रहउची. माने प्रत्येक cylinder पेंका प्रत्येक injectors रहउची. From here, this high pressure fuel is supplied to the injector. Supply तो हे गला, किंतु केतोळे सप्लाई करार अछि, केते अमाउंट सप्लाई करार अछि. For that, at proper time, a mechanical operated valve, which is a push rod or a rocker arm, allow the fuel to enter to the cylinder through a nozzle. Next asla amara unit injection system. From the figure you can see, एठी कोण हुए गोटे पंप थाए, गोटे low pressure pump. Fuel को pressurize करूची, but not as high as required for your injectors. Low pressure pump मोर cylinders को supply करूची fuel. प्रत्येक cylinders पेंका
गोटे हाउसिंग अच्छी से हाउसिंग भितर हाई प्रेशर पंप रोचे प्लस इंजेक्टर्स रोचे. दैट मीन्स high pressure pump and nozzle are combined in one housing for each and every cylinder. So fuel low pressure pump ru high pressure pump ku gala, and from the high pressure pump it goes into the injector. Again here also at proper time a rocker arm activates the plunger, thus inject fuel into the cylinder. Also the quantity of fuel injected is controlled by the effective stroke of the plunger. Next come your individual pump injection system. Just like our previous case, एठी भी प्रत्येक सिलिंडर पे का तारो तारो पंप रोचे, तारो तारो इंजेक्टर रोचे. The only difference is the pump is not as one unit as the injector. एठी देखि पारछो पंप्स गोडा को इंजन साइड रे रोचे, सिलिंडर आखा पाखे रे रोचे, but not with the injector. एटा हला गोटे वे जेतोले मोरो पंप्स गोडा को अलगा हेई की इंजन साइड रे रहिला. अदरवाइज एठी जेमती सबु जाक पंप्स गोटे लाइन रे क्लस्टर हेकी रहिबो नियर द इंजन, अगेन नॉट इनसाइड द सिलिंडर हेड along with the injectors. Here also high pressure pump plunger is actuated by a cam which produces fuel pressure necessary to open the injector valve, and again the quantity of fuel injected is controlled by the effective stroke of a plunger. Distributor injection system टिके different. आमे देखिलो आमको इंजेक्ट करिया मीटर करिया कंट्रोल करिया some different means are required, but distributor injection system रे गोटे पंप थाए. This pump is the only pump which injects, meters and also times the fuel injection. Here the pump which pressurizes the fuel also meters and times it. ए fuel टा मोरो सबु जाको काम करिकी डिस्ट्रीब्यूटर को पठेला, and the distributor different cylinders को मोरो हाई प्रेशर फ्यूल गुड़ा को पठेइबो. एज कि गोटे डिस्ट्रीब्यूटर ही अच्छे जे कि सब सिलिंडर्स को सप्लाई करूची, सेइथि पेंका a uniform distribution is ensured. These are your different types of fuel injection system. Now coming to the air intake system. एयर फिल्टर गोटे आमे यूज करचु सो दैट एयर टा डायरेक्ट मोर डीजल इंजन को एंट्री कर परिबो. आमे एयर फिल्टर को हम पे यूज करिवो बिकॉज मते एयर फिल्टर्स आर यूज्ड टू सप्लाई द फ्रेश एयर टू द डीजल इंजन फॉर द पर्पस ऑफ कंबशन. फ्रेश एयर फोनी कोन अगेन जस्ट तादर इम्प्योरिटीज किछि रहइबनी. जदि किछि इम्प्योरिटीज रहिला एयर रे जेतोले से एयर टा मोर कंप्रेस हबो, दोज इम्प्योरिटीज माइट बी having a hindrance, give a hindrance to the complete combustion of fuel. That is why I have to make sure कि मोर fuel without any impurities enter करिवो. Sometimes noise may be transmitted back to the outside air via the air intake system. So किछि cases रे I use a silencer is needed in between the engine and the intake system. Again we have to make sure that there should be minimum pressure loss in the air intake system so that मोर एफिशिएंसी किंबा पावर रे किंबा तार स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन रे किछि प्रॉब्लम न हो. किछि किछि केसेस रे मु सुपर चार्ज यूज करे. अगेन व्हाट इज दिस सुपर चार्जिंग? सो sometimes air is pumped into the cylinder at a pressure greater than the atmospheric pressure, and this process is known as a supercharging. जेतोले मु एयर टा को आगुरु ही इंजन रे पठा पूर्वरु ही जदि तारो प्रेशर बढ़ाई देली, देन कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट तारो डेंसिटी बढ़िबो, एंड एज की वॉल्यूम कांस्टेंट रहिला मोर मास ऑफ एयर इनटेक मोर बढ़िबो. तो जदि मु अधिक एयर इनटेक नउची मोर चांसेस कि मोर फ्यूल टा कंप्लीट कंबशन हबो बढ़े जिवो. सो for complete combustion of the fuel inside the diesel engine I ensure कि गोटे सुपर चार्ज यूज हुए. जेतले मो सुपर चार्ज यूज करबे इन अ इंजन द पावर आउटपुट इज मोर than the engine of the same size. Also जदि मु गोटे बड़ इंजन सहित कंपेयर करिबी अ छोटो इंजन विथ सुपर चार्जर तांको पावर आउटपुट सेम आसीबो. So why not a supercharger? The various advantages of superchargers are the power increases कहीं ना मोर mean effective pressure मोर increase हो जाउची, fuel economy बढ़ी जाउची कहीं ना turbulence सकासे मोर fuel आउ air mixture भलो रहउची,
mechanical efficiency बढ़ुची, fuel knock कमुची and volumetric efficiency also increases. Coming to the engine starting system. सबु engine दो निजे पावर प्रोड्यूस करूची बट ताकू स्टार्ट हवा पेन का भी मते गोटे मीन्स दरकार जेमती हमर बाइक्स हो बाइक्स रे हमें किक स्टार्ट करछु नले गोटे सेल्फ स्टार्टर लगाउछु ऑटोमोबाइल्स रे भी हमें गोटे इंजेक्शन गोटे स्विच दबे देले मोर स्टार्ट होउची तो सिमिलरली हियर टू किक स्टार्ट द डीजल इंजन फ्रॉम अ स्टैंड स्टिल और कोल्ड कंडीशन आई नीड अ स्टार्टिंग इंजन सो गोटे छोटो पावर प्लांट पेन का छोटो डीजल पावर प्लांट पेन का आइदर गोटे ऑक्सिलरी इंजन लगी पारिबो नले गोटे इलेक्ट्रिक मोटर यूज होबो बट फॉर अ लार्ज पावर स्टेशन आई विल बी यूजिंग कंप्रेस्ड एयर गोटे कंप्रेस्ड एयर फ्रॉम दिस एयर टैंक इज सप्लाइड टू द इंजन सिलिंडर आउ ए एयर टैंक रे कंप्रेस्ड एयर आसुची फ्रॉम अ मोटर और अ गैसोलीन इंजन ड्रिवन कंप्रेसर coming to the exhaust system more of complete procedure sarla combustion hela then flue gases rahi gala this flue gases are to be exhausted from the engine the purpose is to discharge the engine exhaust to the atmosphere outside the main building it consists of silencers and connecting duct silencer kom pen darkar again noise bahut produce hue to se noise ko kamaya pen ka I use a silencer in some cases as ki ये flue gases गुड़ा को they are product of combustion तांकर बहुत heat थाए तो in some cases this heat is again used to reheat the air which is taken inside the diesel engine so for today's video lecture this is it these are some of the assignment questions I hope you will go through this before my next video lesson that are classify the different parts of diesel engine power plant describe the fuel storage and supply system what are the functions of fuel injection system explain the different types of fuel injection system state the advantages of supercharging the air intake system explain the engine exhaust system why is a starting system required explain briefly thank you so much and further to clarify any doubt you can WhatsApp me at 8270609019 thank you झीटीए तो माटी आम सामाजिक और पारिवारिक जीवनर मूल कथाटी से माने आगकू गले आगकू जीव संसार आम झील मैंने आ पुओंकठू पछरे नाहंती एबे तो बदली गलानी समय बदली गलानी जुग से झील माननकू आहुरी आगकू नहीं आत्मनिर्भरशील और स्वावलंबी करने ओडिशा सरकार सुदक्षा योजना रे सरकारी ITI माध्यम संपूर्ण मागणारे जोगै देउछंती सबु प्रकार उत्कृष्ट मानर वैषयिक ज्ञान कौशलर तालीम एबे आम झील रहिबे सबुठू आगरे सबुठू उपरे मु सफल मु कुशली मु सुदक्षा